अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, मैं हूं सादिया गोंदल और एक बार फिर मैं आपको खुशामदीद कहती हूं जावेद पब्लिशर्स के प्लेटफॉर्म से। आज हम करेंगे किड्स इंग्लिश ग्रेड 4 का चैप्टर नंबर 6 जिसका टॉपिक है इफ़ आई कैन स्टॉप वन हार्ट फ्रॉम ब्रेकिंग। सो लेट्स स्टार्ट। Next question is of transitional devices. Transitional devices are those words, ये वो words हैं that help us to understand the sequence in a paragraph. कोई भी activity, कोई भी method, कोई भी process किस तरह से हुआ उसको बताने के लिए हम use करते हैं transitional devices. For example, on page number 40 आपको जो paragraph दिया गया है उसमें आपके transitional devices हैं last weekend, first, then, next, finally. ये सारे वर्ड्स आपको ये बता रहे हैं कि किस तरह से an incident happened, पहले क्या हुआ, बाद में क्या हुआ। तो उन सब sentences को बताने के लिए हम ये transition words use करते हैं। And the last question is, reread the poem and answer the questions. Question number 1 is, from reading the first and last lines, what do you think what the poem is about? The answer is, the poem is about living a meaningful life by helping others. Question number 2, what moral values does it give you? The answer is, it tells you to practice generosity, kindness, humbleness, forgiveness in your life. Question C, does helping others make you happy? How? The answer is, happiness is an energy that transfers from one person to another. When we help someone, he becomes happy. Page number 40 पे now we will be doing speaking skills section. इसमें हम आज करेंगे dialogue which is about introducing yourself to others. So let's read the dialogue first. Aksa, hello, my name is Aksa. What's your name? Do you live in this street? Zara says, my name is Zara. She is my younger sister, Swaliha. Yes, we are your new next door neighbors. Aksa says, that's good. I am in grade 4. In which class do you study, Swaliha? Zara says, I study in grade 7 and Zara is in grade 4. Aksa says, where are you both going? Zara says, we are going to the karate class. Aksa says, oh, that's really interesting. I would like to join it. Zara says, I hope you will like it. अब इसमें ये जो आपके sentences हैं, she is my younger sister, I'm in grade 4, I'm in grade 7. These all sentences are showing that you are introducing yourself to others. Next section is of language focus, जिसमें first exercise है spelling out. The exercise is about synonyms and antonyms. Synonyms are the words with same meaning. Example, happy का synonym है glad. And antonyms are words with opposite meanings. Example, dark का antonym है light. Dear teachers, आप students को simply ये बताइए, synonyms का meaning है word meanings और antonyms का मतलब है words opposites. The exercise is find synonyms of the words from the lesson. So let's do it once more. Again, hinder, stop, pain, aching, proud, wane, unconsciousness, fainting. ये सारे words, synonyms जो हमने ढूंढे हैं अभी, ये सारे हमने poem से collect किए हैं. The next question is find antonyms of the given words from the lesson again. So let's do it. Antonym of live is not live. Pain is ease. Antonym of break is live. Antonym of cool is ache. And antonym of vain is help. Now let's do the grammar section on page number 41 जिसमें आज हम करेंगे common and proper nouns. What are common and proper nouns? Common noun is the name of anything and proper noun is a special name of anything. आप simply students को ये बताइए, common noun किसी भी चीज़ का नेम हो सकता है या कोई भी चीज़ हो सकती है common noun, लेकिन proper noun एक special name होगा. For example, शालीमार गार्डन्स, अली, ये special names हैं. अली एक
बॉय का स्पेशल नेम है, शालीमार गार्डन्स एक गार्डन का स्पेशल नेम है, प्रॉपर नेम है। नाउ लेट्स रीड दीज सेंटेंसेस एंड लेट्स लर्न द यूज ऑफ कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। अब देखिए आपके पास फर्स्ट सेंटेंस में कॉमन नाउन वाले कॉलम में सेंटेंस है, आई वॉन्ट टू बोरो योर बुक। यहाँ पे आई इट कैन बी एनी पर्सन, बुक इट कैन बी एनी बुक, ये कॉमन नाउन है। लेकिन जब इसी आई और बुक को हम प्रॉपर नाउन में यूज करेंगे तो वो हो जाएगा आमना इज रीडिंग द होली कुरान। आमना इज अ प्रॉपर नेम, होली कुरान इज अ स्पेशल बुक। इसी तरह सेकेंड सेंटेंस में अंडरलाइन वर्ड है सिटी। अब सिटी कोई भी प्लेस हो सकती है, बट प्रॉपर नाउन में हमने वर्ड यूज किया इस्लामाबाद। थर्ड सेंटेंस में कैट कॉमन एनिमल है, लेकिन जब उसी कैट का हम नाम रख देंगे मानो तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। फोर्थ सेंटेंस में माउंटेन्स, बहुत सारे माउंटेन्स हैं, कॉमन नाउन है, बट अगर हम किसी स्पेशल माउंटेन की बात करें माउंट एवरेस्ट तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। द एक्सरसाइज इज क्लासिफाई द वर्ड्स इनटू कॉमन एंड प्रॉपर नाउन्स। पाकिस्तान इज प्रॉपर नाउन, पेंसिल कॉमन नाउन, वुमन कॉमन नाउन, रॉवल लेक प्रॉपर नाउन, लेक कॉमन नाउन, पैरट कॉमन नाउन, इंडस रिवर proper noun, country common noun, Hassan proper noun, Nanga Parbat proper noun. Next exercise is about pronouns. Pronouns are those words that we use in the place of nouns. For example, instead of saying in the same manner he, she, it, we, they, us, ये सारे pronouns हैं जो हम sentences में use करते हैं ताकि एक repetition ना हो और sentence boring ना हो जाए। Let's read the given sentences and underline the pronouns. A. Rahman and Shan are good boys. They like to study together. They is pronoun. Sentence B. He is pronoun. Sentence C. We is pronoun. D. It is a pronoun. Now let's talk about cases of pronouns, types of pronouns. हमारे पास 3 टाइप्स के प्रोनाउंस हैं, सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव, पोजेसिव। सब्जेक्टिव प्रोनाउन में जब भी हम सब्जेक्टिव प्रोनाउन यूज करते हैं सेंटेंस में तो हमें ये पता चलता है कि किसने एक्शन किया, तो जो भी एक्शन कर रहा है वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आई वर्क इन अ फैक्ट्री, यहाँ पे आई इज डूइंग द वर्क, इसलिए वो सब्जेक्टिव प्रोनाउन है। You like reading novels, you read novels, you काम कर रहा है तो you आपका subjective pronoun है। इसी तरह बाकी sentences में he, she, we, they। Second column में है objective pronoun। The thing that receives the action is the objective pronoun। जिस पे action किया जाता है, जिस पे काम किया जाता है, जिस चीज़ पे, वो होता है objective pronoun। Example, she gave me the book। यहाँ पे बुक किसको मिली, एक्शन किस पे किया गया, मी पे, तो यहाँ पे मी इज योर ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। ही बॉट यू एन आइसक्रीम, आइसक्रीम किसको मिली, यू को, तो हियर यू इज द ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। और किसने दी, ही वुड बी द सब्जेक्टिव प्रोनाउन, यू वुड बी ऑब्जेक्टिव प्रोनाउन। बाकी सेंटेंसेस में हिम, हर, अस, देम आपके ऑब्जेक्टिव प्रोनाउंस हैं। लेट्स टॉक अबाउट पोजेसिव प्रोनाउंस। पोजेसिव प्रोनाउंस शो करते हैं आपकी ओनरशिप। फॉर एग्जाम्पल, दैट टॉय इज माइन। नाउ दिस वर्ड माइन इज शोइंग कि ये चीज़ आपकी है। सो माइन, योर्स, हिज, हर्स, आर्स, देयर्स, ये सारे जो वर्ड्स हैं ये शो करते हैं दैट यू ओन समथिंग, इसीलिए दे आर कॉल्ड एज पोजेसिव प्रोनाउंस। थैंक यू एवरीवन, कीप वॉचिंग, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और जुड़े रहिए बोलती किताबों के साथ।